In the previous lecture, we have studied respiration, definition of respiration, and compensation points. What is compensation point? We have also studied respiratory quotient, which you say in the form RQ, capital R, capital Q. And you have also studied in the previous lecture that RQ of fats, proteins, organic acid is different. So in this video we will discuss types of respiration. What are the types of respiration? What are the steps which are involved in this phenomena? So basically there are two types of respiration. One is aerobic respiration and other is anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, as you know, this respiration takes place in the presence of oxygen, while anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. It is very simple definition कि aerobic respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और anaerobic respiration ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी. ये तो पार्ट हो गया इसका. Next, aerobic respiration takes place in mitochondria and in eukaryotic cells. तो प्लेस ऑफ अकरेंस आपको पता चल गया एरोबिक रेस्पिरेशन का. In this condition, glucose is broken down. Glucose is broken down in presence of oxygen into carbon dioxide and water molecules. In the previous lecture, I have given the reaction also कि glucose C6H12O6 plus 6 oxygen 6 CO2 बनते हैं, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 6H2O 6H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए उसके. So this is the part which is related with types of respiration. Now, in a nutshell, in a brief, I will describe you the different processes, steps which are involved in such types of respiration. The detail will be studied in other lectures also. We will describe the glycolysis, we will describe the electron transport system, we will describe the oxidative phosphorylation Krebs cycle. ये हम आगे पढ़ेंगे और उस पे सारा आपको ये भी याद रखना है कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, ये सारा अपने को देखना है. लेकिन आज अपने जो इसमें थोड़ा सा जो स्टडी करेंगे वो इसी से रिलेटेड है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं इन रेस्पिरेशन के पार्ट्स हैं. तो पहला है ग्लूकोज. फर्स्ट वन इज ग्लूकोज. इन ग्लूकोज glycolysis. In glycolysis, glucose is broken down into pyruvic acid, two molecules of pyruvic acid, PYRUVIC, pyruvic acid. ये आप एक जर्नल में बता रहा हूँ आज आपको कि मतलब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, जो ग्लूकोज हैं वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. कैसे कन्वर्ट होंगे वो पूरी रिएक्शन अपने आगे देखेंगे, फ्लो चार्ट में आपको बताऊंगा. 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस में. The other second reaction is link reaction in which
two pyruvic acid molecules which is formed in glycolysis are converted into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. The third part is Krebs cycle. ये आप अभी दिमाग में रखना क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में कौन सी लिंक रिएक्शन उसमें क्या होगा. नेक्स्ट इज Krebs साइकिल. तो अभी आपने देखा पहले क्या बना एसिटाइल कोएंजाइम A. Now in Krebs cycle the molecule of acetyl coenzyme A is converted into carbon dioxide. It is converted into carbon dioxide. And also remember that in all these processes which this glycolysis, link reaction and Krebs cycle, we get NADPH2 molecule which will in turn produce ATP molecule, which will give ATP molecules. ATP, adenosine triphosphate. The next step after Krebs cycle is electron transport system. Electron transport system. In this, NADH is broken down, and the electrons run down the gradient and pushing the protons in outer mitochondrial membrane. तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह दिया. तो जहां इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा. आगे क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स वहां बन रहे हैं तो उन प्रोटॉन्स को ये पुश अप करेंगे कहाँ पे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे. ये आगे अपने और पढ़ेंगे पूरा ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle, link reaction and electron transport chain we will study. The next is oxidative phosphorylation. ये तो मेरे को लगता है सबको ही पता होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है. फॉस्फोराइलेशन आप हमेशा याद रखना कि एटीपी प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या है, एटीपी बन रहा है, एटीपी इज फॉर्म. नेक्स्ट इज anaerobic respiration in which we will include yeast. We will discuss yeast. In yeast, glucose is converted into pyruvic acid. ध्यान से सुनना, glucose is converted into pyruvic acid. And this pyruvic acid is converted to ethanol या ethyl alcohol with the liberation of carbon dioxide. ethanol बन रहा है यहाँ पे और complete breakdown नहीं हो रहा. नेक्स्ट दो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड. और in muscles and RBCs. In muscles during excessive exercise, physically आप काम बहुत कर रहे हो. In muscles during excessive exercise and in RBCs, glucose is converted to pyruvic acid and pyruvic acid is converted to lactic acid. ठीक है. So in this part we have learned about types of respiration. कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, आगे उन इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स का आगे और कहाँ यूज हो रहा है. ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, ethanol. So these are the part which is related with types of respiration. In other lectures we will study about glycolysis,
how pyruvic acid is produced, which are the steps involved, Krebs cycle, electron transport chain, and other reactions also. Thank you very much.